Okay, beta. The first answer 5, first situation, squeezing a piece of lemon between your fingers to extract its juice. What is the agent exerting the force? Mannat? Are you able to unmute yourself, beta? No, ma'am, I have muted them. Kindly allow them to unmute themselves. Okay, fine. Anji Mannat, beta? Ma'am, the agent exerting force is the fingers. Is the fingers. Very good. It is the fingers between which fingers के बीच में आप squeeze करते हैं. What is the object on which the force is acting? Mannat? Ma'am, the object is lemon. 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 ठीक है. A piece of lemon. Okay. What is the result? What is the result? Ma'am, the lemon gets crushed and the juice come out of it. The shape of the lemon changes. Juice out. Okay? This is the result of it. You can keep noting it down simultaneously, beta. Next one, Janvi. The second. Yes, ma'am. Out the toothpaste from its tube. What is the agent? What is the agent? Ma'am, taking. Ma'am, fingers muscular force. Fingers. बिल्कुल ठीक है. Fingers जो है agent which is exerting force are the fingers. Then what is the object on which the force it is acting? Ma'am, toothpaste tube. Okay, बिल्कुल ठीक है. Toothpaste tube. And what is the result? Ma'am, change in the shape of tube and paste comes out. बिल्कुल ठीक है. Change in shape of tube. और दूसरा यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं. And second one, toothpaste comes up. यहाँ पर भी आप फर्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि शेप ऑफ लेमन चेंजेस. Alright. The third one, a load is suspended from a spring while its other end is on the hook fixed to the wall. मतलब एक एंड पे आपने फिक्स कर दिया है, एक नेल पे आपने एक स्प्रिंग लगाया है और स्प्रिंग को आपने हैंग कर दिया है नेल के साथ और दूसरे एंड के ऊपर एक वेट लगा दिया उसके पास में. Now what is the agent exerting the force? Which agent is exerting the force? I want Simran to answer me. Ma'am, the agent exerting the force is the load suspended. Suspended load. बिल्कुल ठीक है. ये जो suspended load है, वही agent है जो exert कर रहा है force. What is the object on which it is acting? The object on which the force is acting is the spring. Spring. बिल्कुल ठीक है बेटा. It is the spring. And what is the outcome of it? What is the effect of it? The change in the shape of spring. बिल्कुल ठीक है. स्प्रिंग जो है वेट के कारण इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा. सो स्प्रिंग शेप ऑफ स्प्रिंग चेंजेस. और किस तरह से चेंज होगा? इट स्प्रिंग जो है इलोंगेट्स. स्प्रिंग इलोंगेट्स. आई होप यू आर एबल टू सी इट. हाँ बिल्कुल ठीक है. स्प्रिंग जो है इलोंगेट्स. Okay, very good. The next and the last one is an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. किसी height के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो athlete जो है उसके ऊपर jump कर he's trying to cross the. So what is the agent exerting the force? I want Janvi Gera. Ma'am, muscles of leg.
मस्कुलर फोर्स ऑफ लेग्स, बिल्कुल ठीक, इट इज द मस्कुलर फोर्स ऑफ लेग्स, क्योंकि लेग्स तो ही वो रन करके लिफ्ट द लेग्स अप. ऑन व्हाट इट इज एक्टिंग? ऑब्जेक्ट ऑन Ma'am, ground. हाँ, Ma'am, ground. ground. It is putting the force. Anyone wants to differ with it? Can unmute. Object on which the force is acting. किसके ऊपर force act कर रही है? Ma'am, the athlete. हाँ जी सिमरन. Athlete. Athlete's body, क्योंकि उसकी body पूरी lift up हो रही है. जय आदित्य, you want to say something? Jay Aditya, you want to say something? No? Okay. What is the result? Ma'am, athlete moves in upward direction to Athlete makes high jump. Or athlete is able to cross the bar. Right? High jump ही हो गया वो. Want to add something to it? Anyone? Nandini? Ma'am, ma'am, change in the state of motion. Change in the state of motion in what way? जब भी वो जंप करेगा ऐसे खड़े होकर वो सीधे जंप नहीं करेगा. अगर आपने जंप देखा है, हाई जंप, द एथलीट फर्स्ट रन्स अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस रन करता है और उसके बाद में अपनी बॉडी को लिफ्ट कर कर ऊपर को लेकर जाता है. ऑलराइट. तो मोशन में तो वो पहले भी था, मोशन में वो बाद में भी. ऑलराइट. Yes, ma'am. Anyone else wants to add something or want to differ in this particular question? Otherwise we'll proceed with the next question. No? Shall we proceed further? Okay. A blacksmith hammers. बेटा ये आपने note down कर लेना है, because this is the way you have to write down in your notebook also. ठीक है? So this question में इसलिए इसको ये format दे दिया ताकि आपको समझ भी आ जाए easily और आपको learn भी हो जाए. So you make sure that you have noted down this. I'll leave it like this itself, but we have to discuss other questions also. So it is better that you note it down. I'll give you few seconds. A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. Blacksmith वो होता है जो iron के tools बनाते हैं. तो वो iron को hot करके, जैसे आपने class 7th में पढ़ा हुआ है, changes में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, in class 6 also, कि अगर हम metal को heat कर देते हैं to a very high temperature, it melts and then you can beat them and draw them into desired shape. तो वो भी वही काम कर रहा है. How does the force due to hammering affect the piece of iron? तो जब वो हैमर कर रहे हैं हॉट आयरन पीस को, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है? फोर्स ऑब्वियसली इज व्हेन यू आर हैमरिंग. ठीक है. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पीस ऑफ आयरन? आई वांट जसमिलन टू आंसर मी. A blacksmith uses his muscular force to hammer a hot piece of iron. The muscular force changes the shape of the iron so that it can be in the desired shape of the blacksmith. हम इतना ही, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा. जो फोर्स अप्लाइड बाय द हैमर जो है, फोर्स बीइंग अप्लाइड बाय द हैमर फ्लैटन्स the piece of iron and it changes its shape and size. उसका shape और size दोनों change हो जाता है into the desired one what we wanted. All right. Okay. Next, an inflated balloon. Inflated balloon was pressed. An inflated balloon was pressed against a wall. Balloon में आपने हवा भरी और उसको wall के against press कर रहे हैं. After it had been rubbed with a piece of synthetic cloth. आपने एक balloon लिया, उसके अंदर हवा भरी, उसको एक synthetic cloth के ऊपर rub किया और wall के ऊपर press किया. You will find that the balloon sticks to the wall. थोड़ी देर के लिए, momentarily होता है.
what force might be responsible for attraction? Obviously when आपने कोई glue नहीं यूज किया, आपने कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन आपने उसको रब किया सिंथेटिक क्लॉथ के ऊपर और वॉल के ऊपर अटैच कर दिया, मतलब it got stuck to the wall. So that means what force might be responsible for the attraction between the sticking balloon and the wall? I want Navroz to answer me. Navroz, beta, kindly unmute yourself. No? Navroz, are you there, beta? Kindly unmute yourself. I guess he is not there in the class. He is not physically present in the class क्योंकि बच्चा आपको unmute करना पड़ेगा. Then only you can answer. He is there in the class, but he is not able to unmute. Maybe some problem. Pari, can you answer? Pari, please unmute yourself. Some children are there in the class, but they don't want to answer. Jayaditya, कौन सी force है which is responsible between the attraction between the balloon and the wall? Jayaditya Bhardwaj. नहीं. Kushmeet, 8th pink, roll number 22. Ma'am, contact. Who is trying to say something? Mr. Jayaditya, हाँ जी बोलिए बेटा. Electrostatic. But I can't hear you. You have to be louder. Akal Simar, please mute yourself, Jayaditya. Akal Simar. No. Anshuman, Sood. 8th pink, roll number 23. Please answer. No. Hazel. The force responsible for the attraction between the balloon and the wall is electrostatic force of attraction. Answer है, it is the electrostatic force. Electrostatic force responsible for attraction between the balloon and the wall. This you can write down in your book itself, my dear. Name the force acting on plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. आपने एक bucket लिया, plastic bucket जिसमें पानी है और उसके बाद आप उसको उठाते हैं. This you can do it at home itself. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring the change in its state of motion. आपने उसको hold किया हुआ है अपने हाथ में, जिस bucket में आपने पानी भरा उसको आपने hold किया हुआ है hand में. We have to tell why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. पहले हमें ये बताना चाहिए कि उसमें कौन सी forces act कर रही हैं. So the first part of the question is what forces are acting on the bucket which you are holding in your hand above the ground? Nandini. Muscular force. हाँ जी. Muscular force. Muscular force ऊपर की तरफ काम कर रही है. I'll be erasing this from this. There are two forces which are acting on the bucket which you are holding in your hand. बेटा ऐसे situation based questions जो हैं वो आपको बहुत बार आ सकते हैं. So you have to understand the concept. आपके हाथ में this hand is very bad which I have drawn. ये bucket है in which there is water. So there is muscular force of your hand which is pulling it upwards. ये ground है. This is surface. Ground after surface. Ground surface. And आपने इसको हाथ में हेल्ड किया हुआ ऊपर. तो muscular force जो है वो ऊपर की तरफ act कर रही है, right? And then there is another force which is acting. Another force which is acting is Nandini. Magnitude. हाँ जी. Magnitude. Can't hear you, beta. Ma'am, may I? हाँ जी. Ma'am, force of gravity. Force of gravity बिल्कुल ठीक है. The force of gravity is pulling it downwards. So force of gravity जो है it is working downwards.
So there are two forces acting on this bucket which is held in hand, and ये वाली जो bucket force है, that is one is muscular force which is acting upwards, which is pulling, you are pulling it upward, and force of gravity is pulling it downwards. Now the question is why the forces acting on the bucket do not change, bring a change in its state of motion. It remains like this. ऐसे ही वो रहता है. तो हर्षवीर, can you answer me? Because the muscular force is acting upwards and the force of gravity is acting downwards. They are acting in opposite directions, so we do not see any force. बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन थोड़ा सा मिस कर गए बच्चा. They are no doubt acting in opposite direction, but they are equal. This you have to write down. Equal and opposite. Equal in amount, equal in magnitude, and opposite in direction. अब इसका केस हमने पढ़ा होगा. जब two forces are acting on an object in an opposite direction but their magnitude is same, the net result क्या है? Net result क्या है? What is the net force acting on the bucket? The net force acting on the bucket is 0. इक्वल है अमाउंट में और ऑपोजिट है डायरेक्शन. तो नेट फोर्स दोनों का जो दोनों की जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएंगे. अमाउंट ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा, और दोनों के डिफरेंस से, क्योंकि वो इक्वल है और ऑपोजिट भी है, तो सब्ट्रैक्ट होगा. ऑपोजिट के कारण सब्ट्रैक्ट होंगे, और इक्वल है तो लेट्स से इट इज 10 न्यूटन्स एंड 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग हियर, 10 हियर, so 10 minus 10, it comes out to be 0. So the net result is net force acting on the bucket is 0, and hence there is no change in, therefore no change in motion. No change in state of motion. All right. Anyone who has not understood, kindly tell. सबको समझ आ गया बेटा? इसी तरह से सिचुएशन होंगे. Next, 9th question. A rocket has been fired. Jatin, you need to be mute yourself, bacha. Okay. Ma'am, has been fired upwards to launch a satellite. ठीक है? आपने देखा होगा on TV, rocket जब हम fire करते हैं to launch a satellite in its orbit, the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. Launching pad मतलब अर्थ से जैसे ही रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सी दो फोर्सेस जो हैं उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं? Almost same type of question. I want Harshdeep, Janvi to answer me. सिमरदीप, आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ, तो सिमरदीप कैन आंसर मी. 8th thing. You have unmuted yourself, तो आप आंसर कीजिए सिमरदीप जी. सिमरदीप, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि आप आंसर नहीं दे रहे हैं. हिमाक्षी 8th ग्रीन. हिमाक्षी 8th ग्रीन क्लास. Okay, very good. Mannat 8th pink. Ma'am, may I answer? Yes, ma'am. May I? Hanji, who is trying to answer? Please tell. Ma'am, the May gas, I? Please answer, beta. 8th pink. ma'am, the gas is produced by burning fuel forced out through the nozzle with a high force in downward direction. रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. जैसे ही वो launching pad से जा रहा है, कौन सी दो forces act कर रही हैं? Force of gravity. Ma'am, may I tell? Ma'am, may I? Gravitational force of Earth is one. Gravitational force of Earth which is pulling the rocket downwards. ठीक है, towards the ground. Force. Frictional force. Frictional force. Earth's atmosphere opposes its motion. Thrust जरूर मिल रहा है. There is another thrust. Why is it still going upwards? It is because of the thrust which is given, upthrust which is given by the exhaust gases which are coming out from its
रियर, तो उससे जो आ रहा है उसको थ्रस्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन दो फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, एक अपथ्रस्ट भी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द हॉट गैसेस व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम इट, बट it is the frictional force due to the earth's atmosphere and the gravitational force. Anyone wants to add something to it? Please unmute in case you want to add something to it. Gunjasdeep Kaur, you want to add something? Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, बोलिए सिमरन. Ma'am, question number 7 में और question number 8. Ma'am, question number 7 में और question number 8 में one line का आंसर लिखना है. Gunjas, I'm not able to hear properly. Nandini also wants to say something. You're not very much audible. Ma'am, question number 7. Ma'am, question number 7 and question number 8 में one line का आंसर लिखना है. हाँ जी, अब बोलिए बेटा. We have used droppers, maybe for taking out a liquid or maybe a cough syrup or something. So when we press the bulb of the dropper with its nozzle in water, and air in the dropper seem to escape in the form of bubbles. Bubbles आने लग जाते हैं. Once we release the pressure on the bulb, the air gets filled in. Air जो होता है, जब हम उसको press करते हैं, next class I'll be showing you. इस तरह का एक ड्रॉपर होता है, जब ये रबर का होता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो एयर जो इसके अंदर है इट विल कम आउट, और अगर आप लिक्विड में रख रहे हैं तो उसके बबल्स आपको नजर आएंगे, एयर के बबल्स. अगर आपने इसको इन अ लिक्विड रखा हुआ है, आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए पहले. ये सारे बेटा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में आपने इसको ड्रॉपर को इन अ लिक्विड रखा हुआ है, और जब ये रबर वाला नोजल इसका प्रेस करते हैं तो जो एयर इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो प्रेस आउट बल्ब जो है इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. और उसके बाद में जब आप इसको रिलीज कर देंगे, आप उसको यू विल रिलीज द प्रेशर ऑन द bulb here, what will happen, जो एयर एस्केप हुई थी तो इसमें एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया, तो उसको फिल करने के लिए water will move into it. All right, this is how it works. The rise of water in the dropper is due to Savinay, मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल ठीक कहा. क्यों? क्योंकि ये वाटर के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट इज ऑलवेज एक्टिंग. तो जब हम यहाँ पर ये एम्प्टी हुआ, तो एम्प्टी स्पेस को ये जो प्रेशर है इसको पुश इट डाउन एंड वाटर विल राइज इनटू द ड्रॉप. द सेम प्रिंसिपल एक्ट्स जब हम लोग स्ट्रॉ से कोई लिक्विड पीते हैं. आप घर में ट्राई कर सकते हैं. स्ट्रॉ आई एम श्योर एक आधा कोई घर पे होता है. आप फिल कीजिए वाटर एंड देन यू ब्लो एयर फ्रॉम द टॉप, तो आप देखेंगे उसके अंदर बबल्स आते हैं. एंड देन व्हेन यू ब्लो बबल एंड देन यू सक इन, तो क्या होता है, एयर है दैट इज एम्प्टीड आउट एंड देन वाटर विल रश इन into the straw because of the atmospheric pressure occurring on the surface of the water. Clear to all of you? That is all. I'll be sharing the questions which you have to write in your notebooks. Okay? So I'll be sending you homework today. Akshita. Akshita beta. What is the pressure exerted by the air around us called? Ma'am, may I? Himanshi is answering. Hanji. Atmospheric pressure. शाबाश, atmospheric pressure. बिल्कुल ठीक है बेटा. Second one, the force acting on surface per unit area. Force acting on surface per unit area. I want to ask to some students who have not raised their hands. So let me check.
I want Lovejoy Singh. Lovejoy Singh. ऐसे check भी हो जाता है whether they are there in the class or not. Lovejoy Singh. No? Okay. He left the class, ma'am. Okay, ma'am. I want Jaskaran of 8th Green to answer. The force acting on a surface per unit area. No. Sukhnoor Kaur? Ma'am, No, beta, the ones I am asking. सिर्फ वही answer करेंगे. Sukhnoor Kaur? Force acting on unit per area. Ma'am, I don't know. Okay, I want Parth Madan. Yes, ma'am. Please answer, beta. What is the force acting on a surface per unit area called? Ma'am, हाँ जी, मैम नहीं हो तो हाँ जी, मैम नहीं पता नहीं पता. सविनय? मैम प्रेशर Pressure. It is called pressure, my dear Parth.